Now sing. Sing it. Bolo. Nava Jaya Giridharadari Jaya Giridharadari Jaya Yasodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Brajajanaranjana Jaya Yasodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Jaya Yasodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Brajajanaranjana Jaya Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Yamuna Jaya Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Raja Jaya 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 Bhupijana Balaba Jaya Giridharadari Jaya Giridharadari Jaya Giridharadari Jaya Jaya Bhupijana Balaba Jaya Giridharadari Jaya Giridharadari Jaya Giridharadari Jaya Yasodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Brajajanaranjana Jaya Yasodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Brajajanaranjana Jaya Brajajanaranjana Jaya
Jaya Yamuna Tira Banachari Jaya Pandaviyari Jaya Yamuna Tira Banachari Jaya Pandaviyari Jaya Radha Madhava Jaya Pandaviyari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jeta Gori Go, Hare Go, Jeta Go, Hare Go. Jai Gori Go, Hare Go, Jeta Go, Hare Go. Jaya Vishnupa Paramahansa Paribhya Kajacharya Sutra Sadasya Srimad Esi Bhaktivedanta Samista Prabhupada Ki. Jaya Vishnupa Paramahansa Paribhya Kajacharya Sutra Sadasya Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. ISKCON Chesta Prabhupada Ki. Namachaya Shlari Resta Ki.
Granthras Bhagwatam ki, Samvita Bhakta Binda ki, Nitai Gopimanande. Glory to some devotees, glory to some devotees, glory to the some devotees, glory to the Lotus feet of Sri Guru. You have the English? Want to say something? Or want to say something? You need a book. Oh, you don't have the English book? You don't have the English book? Currently one devotee is that's why. Oh, I see. Okay. Want to introduce Maharaj? Huh? Devotees are new, so you want to introduce. Okay, you can do this. हरे कृष्णा। आज हम सबको सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस देश ईश्वर प्रभु जी हैं। प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, लगभग 26 साल से वृंदावन में रह रहे हैं और प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए दिया और कितने सारे वैष्णव बनाए जो भगवान की सेवा में प्रवर्तित हो रहे हैं। प्रभु जी का भौतिक शरीर नाइजीरिया से है और प्रभु जी बहुत ही रिच मुस्लिम परिवार से थे, बहुत बड़े मुस्लिम परिवार से थे। फिर भगवान की विशेष कृपा हुई, प्रभुपाद जी गवर्नमेंट से जुड़े और आज फुल टाइम वृंदावन में रहते हैं और यहाँ पे फेस्टिवल के लिए आए हुए हैं और हम सबको विशेष कृपा कर रहे हैं भागवतम क्लास के माध्यम से। हम सबको सौभाग्य है, इतने वरिष्ठ भक्त जो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए समर्पित है, भागवतम कथा करेंगे। हम सब लोग कथा का अमृत का पान करेंगे। हरे Narayana Namaskritya Narayana Banaruttama Devam Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayesva Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Tamasloke Nasti Bhakti Bhavati Nastiki Vede Ramani Chava Purane Bharati Tata Hatu Vadyam Shamadi Chahari Savatagiyati Mokam Karati Bhajana Dhangu Lamriti Vriya Kripata Vande Sri Gurudinatarine Paramanda Madhu Gama Pradita Kadavuta Paramoni Mashamstam Vedam Vastvam Atra Vastvam Shivaram Chapaturi Mulam Srimad Bhagavati Mahamani. Thank you, my Maharashtra, Sabhividi, Havaruja Kshetra Kshetra Krishna, Nigam Kapata Nugaritam Valam Sukam Mukundis Kumitam, Pibatam Bhagavatam Rasamalaya, Maruna Vashkam Bhamuka, Yashvashamanayam Krishna Paramapurushi, Bhakti Tvadi Kunsa Sukam Vamaya, Atoyam Brahma Sutrana Varatata Vinaya, Kayati Bhashara Pushu Vedata Parivimita, Savabhiditi Asanam Saram Saram Paribhimita, Savabhidanta Sarami Sri Bhakta Mishate, Tarashamita Shati Tashyana Yata Shirati Koti. Aganati Mandasya Agananganas Lakayata Shintalitas, the Shiva Nama. Namamo Vishnupadaya Krishna Pistaya Bhutale Shimati Bhakti Vedanta. Namaste Saraswati Devi Gauravani. Devi says Sunya Badi Pashta Krishna. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So I thank everyone for being here this morning for this Bhagwatam class, and especially those who are listening online. So everyone will get benefits from the recitation of the Srimad Bhagwatam. Where is it?
Okay. Okay. Is it on live? It is like. Okay. So it's a great honor to be speaking Bhagwatam, because Bhagwatam is the supreme scripture which specifically describes Lord Sri Krishna, and is the most is considered to be the king of all the scriptures. श्रीमद् भागवतम बोलने का सौभाग्य मिला है। बड़ी बात है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो सर्वोपरि ग्रंथ है। And anyone who has read Bhagavatam will develop love and affection for Lord Sri Krishna. कोई भी व्यक्ति जो श्रीमद् भागवतम को सुनता है वो भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करेगा। Srimad Bhagavatam is not different from Lord Krishna himself. Krishna came. He mentioned in Bhagavatam, Krishna Swadamopagati Damagena Divisaha Kalona Stadishanesa Puranako Dimodita, that when Lord Krishna appeared 5,000 years ago, he performed so many leelas, so many wonderful pastimes to give delight to his devotees. And you want to translate that? श्रीमद् भागवतम जो है भगवान से अभिन्न है। भगवान इस धरती पे 5000 साल पहले आए, उन्होंने अनेक लीलाएं की। इसी का वर्णन यहाँ पर हम पाएंगे। So after performing his leelas pastime, so Lord Krishna finished his pastime. He wind up his pastime. Everything became manifest. भगवान अपनी लीलाओं को संग्रह करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने अवतरण के रूप में आए अवतरण के लिए। And then, in order to benefit the people of Kali Yuga, and especially Kali Yuga, is so much of ignorance. So Lord Krishna again incarnated himself, he advented himself, but this time in the form of Srimad Bhagavatam. कलयुग की माया के इतना प्रभाव है, भगवान कुछ समय बाद फिर भागवतम पुराण के रूप में आए। So Srimad Bhagavatam is not different from Krishna himself. भागवतम जो है भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। So if you have Srimad Bhagavatam in your house, then it's as good as having the Supreme Lord himself in your house. ये आपके घर में से भागवतम है तो भगवान के हृदय के समान है आपके घर में रखना। And if there should be a house that does not have Bhagavatam, that house is just as good as a crematorium. As good as crematorium. Crematorium? Cemetery. It's a crematorium. यदि आपके घर में भागवतम है तो भगवान की भक्ति के समान है। So you should always make sure that you have Bhagavatam in your house. ध्यान रखिए कि आपके पास भागवतम रहे। Oh, okay. It's difficult for you? Okay. So today I will be speaking on the second canto, chapter 4, text 25. आज महाराज जी दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 25वां श्लोक ले। So we read together. I'm going to read now, and then because this is Devanagari. अभी महाराज जी पढ़ने वाले हैं। Eta devatsmabu rajan naradaya viprichate vedagabam biadat saksha yadaha hari ratmana eta devatmabu rajan naradaya viprichate vedagabam Bobhyat das sakshad
Yadaha Hariratmanaha. Okay, let me just read the. Oh, I was reading the Devanagari, so I was reading the Devanagari. So I read the translation purport by Srila Prabhupada. First, word for word meaning. On this matter, Eva, exactly, Atmabu, the firstborn Brahmaji, Rajan, my dear king, Naradaya, unto Narada Muni, Viprichate, having inquired about it from Vedagabha, one who is impregnated with Vedic knowledge from birth. Abhyadhat, apprised, Sakshat, directly, Yataha, what he spoke, Hari, the Lord, Atmana, unto his own Brahma. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. My dear King Brahma, Brahma, the firstborn, on being questioned by Narada, exactly apprised him on this subject as it had been directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. हे राजन, नरद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही। यह जन्म से ही वैदिक ज्ञान का धारण कराया गया था। Purport. As soon as Brahma was born of the abdominal lotus fetus of Vishnu, he was impregnated with Vedic knowledge, and therefore he is known as Vedagarbha, or a Vedantist from the embryo. No, let me finish reading. Without Vedic knowledge or perfect, infallible knowledge, no one can create anything. All scientific knowledge and perfect knowledge are Vedic. One can get all types of information from the Vedas, and as such, Brahma was impregnated with all perfect knowledge, so that it was possible for him to create. Thus, Brahma knew the perfect description of creation, as it was exactly apprised to him by the Supreme Lord Hari. Brahma, on being questioned by Narada, told Narada exactly what he had heard directly from the Lord. And Narada again told exactly the same thing to Vyas, and Vyas also told Sukadev exactly what he heard from Narada. And Sukadev was going to repeat the same statements as he had heard them from Vyas. That is the way of Vedic understanding. The language of the Vedas can be revealed only by the above mentioned discipleship section and not otherwise. You can read the Hindi. Read the Hindi. जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के आगे पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृजन नहीं किया जा सकता। सारा वैदिक वैज्ञानिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इसीलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण वितरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसे उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यास को बताई और व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था। सुखदेव गोस्वामी वही बातें अब उसी तरह सुनाने जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को जानने की यही विधि है। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। So translation again. My dear king, Brahma, the firstborn, on being questioned by Narada, exactly apprised him on this subject as it had been directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. Want to read again? Okay. So, Brahmaji is the son of Lord Narayan. Brahmaji was born from the abdomen of Lord Narayan at the very beginning of creation. ब्रह्मा जी जो है तो नारायण के पुत्र हैं और सबसे पहले ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए। So when Brahmaji, when he was born, as a first being, he was also given enlightenment or knowledge by the Lord himself. जब ब्रह्मा जी का सबसे पहले जन्म हुआ तो उनको प्रकाश और ज्ञान का अनुभव हुआ। Because at the beginning of the creation, Brahmaji was born on the lotus flower, on the lotus. क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ था। So at that time, Brahma could not understand the source of his birth. He could not understand. उस समय ब्रह्मा जी अपने जन्म के स्रोत को नहीं समझ पा रहे थे। And everything was full of darkness. Everything was dark. There was nothing. Brahma could not see anything. तो उस समय उपयुक्त क्या था, अनुपयुक्त क्या था, समझ नहीं पा रहे थे। So Brahmaji was searching all around. He was looking everywhere, trying to see. ब्रह्मा जी यहाँ वहाँ सब जगह देख रहे थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। He was trying to see, determine the source of his creation. वो अपनी उत्पत्ति कहाँ से हुई नहीं देख पा रहे थे। And then Brahma, he heard a sound, but that says tapa, tapa, do some austerity. उस समय ब्रह्मा जी एक ध्वनि सुनाई दी, तपा तपा। So hearing this, Brahma started on a austerity tapasya for a long period of time. ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी लंबे समय के लिए तपस्या स्टार्ट किए। And then the fruit of his tapasya is that Brahmaji could see everything. Everything became revealed to him. उस तपस्या के फल से ब्रह्मा जी सब कुछ देखने में समर्थ हुए। And then the Supreme Lord enlightened Brahma by giving him knowledge. He gave him enlightenment. भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को ज्ञान की और प्रकाश की प्राप्ति हुई। So it's mentioned here, mentioned this verse that Veda Garbha, that someone, it mentioned Veda Garbha means somebody who apparently was enlightened from the womb, but Brahmaji, he was not born from the womb. He was self-manifested from the lotus. So there was no like Garbha womb. Normally everybody take birth from the womb of a woman. यहाँ से ये समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी का जन्म किसी सामान्य गर्भ से जैसे हम सबका होता है वैसे नहीं हुआ है। वो लोटस जो है कमल के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जो कि अलौकिक है। And there are many personalities
who were actually in the womb of their mother, and they were instructed. They were given instructions, just like Prahlad Maharaj. When Prahlad Maharaj was in the womb of his mother, Nada Muni instructed him. ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो कि गर्भ से प्रकट होते हैं और उनको भगवान की कृपा मिलती है। जैसे जैसे प्रहलाद महाराज वो गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन नारद मुनि की कृपा से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। But because Lord Brahmaji was given knowledge from the very beginning of creation, so it was stated that it was Vedagarbha, he was given knowledge. It was Vedantis from the womb, like that. Even though he was not born from a womb, he wasn't born, he was self-manifested. क्योंकि वो सृष्टि के सबसे पहले उत्पन्न हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और उनको वेदांती भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उनको वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था। So Lord Brahma is called Atmabhu. So Atmabhu is someone who is self-manifest, Atmabhu. इसलिए ब्रह्मा जी को आत्मभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं के द्वारा उत्पन्न हो। So Srimad Bhagwatam is Mahapurana, is the supreme Purana, Srimad Bhagwatam. इसलिए श्रीमद् भागवतम जो पुराण है ये महापुराण है, सबसे बड़ा पुराण है। Now the Puranas usually they have characteristics in order to understand what is Purana. Puranas have characteristics. पुराण की भी अलग-अलग कैटेगरी है, अर्थात उसकी अलग-अलग श्रेणी है। The characteristics of Purana is that they must contain 5 subjects. 5 subjects which must contain in the कोई भी जो पुराण Puranas. होता है उसके 5 विषय होते हैं। ध्यान से सुनो सब लोग। And these 5 subjects has to do with Saga, Puranas, and Shaga, Vishaga, creation, sub-creation, history, Manvatara, history of the Manus. So the Purana normally contain 5 different subjects. पुराण के 5 विषय होते हैं, जैसे सर्ग है, सृष्टि है, ऐसे करके 5 मुख्य विषय होते हैं इसी पुराण। So even though there are so many Puranas, there are 18 Puranas, and then there are 108 sub-Puranas. ऐसे अलग-अलग करके 18 पुराण और कुछ पुराण भी हैं। But every Purana must contain these 5 characteristics. लेकिन प्रत्येक पुराण को ये 5 विषय रखने पड़ते हैं। But Srimad Bhagwatam is different because it's Supreme Purana. So Srila Jiva Goswami expanded on this view. So Sukadeva Goswami it mentioned 10 characteristics of this Purana, 10 characteristics. लेकिन श्रीमद् भागवतम जो पुराण है अलग पुराण है, ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसके 10 अलग-अलग विषय हैं। So in the second canto, Bhagwatam, chapter 10, text 1, so it says, Atasa Gobishagascha Stanam Poshanam Uttaya Mambantari Sanokata Niroda Mukti Astraya. So these are 10 characteristics of Purana, which are described in the Bhagavatam. दूसरी स्कंद के 10वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें 10 अलग-अलग विषय के बारे में कहा गया है। So it's mentioned in the Srimad Bhagavatam, there are 10 divisions of statements or knowledge regarding the following: the creation of the universe, sub-creation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impetus, the change of Manus, the science of God, returning home back to Godhead, liberation, and the summon bonum. You can open the 10th chapter, text 1, 10th chapter. You can read it.
Number 1. दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस भागवतम में 10 विभाग है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। So these are the 10 characteristics of the Bhagwatam. The 10 characteristics. ये से भागवतम की 10 श्रेणियां हैं। And in this chapter is dealing with creation, the beginning, the creation. Saga means the manifestation of everything, beginning. इस अध्याय में सृष्टि का जो वर्णन है सर्ग, यहाँ से शुरू किया जाता है। So we can see that Parishit Maharaj, he when he was on the bank of the Ganges and is about to give up his life, so all the many sages they have come to be with him. And Parishit Maharaj, he was asking all the sages what he should do, and especially since he's about to give up his life. परीक्षित महाराज जो गंगा के तट में थे और अपने जीवन का त्याग करने वाले थे, बहुत सारे ऋषि आए और अलग-अलग विषय में प्रश्न पूछ रहे थे, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। So that time, this was before the arrival of Sukadeva Goswami. Many sages, they were giving so many different advice to Parishit Maharaj. Some are saying, we will give you blessing. Some are saying, perform some meditation. Some are saying, perform some tapa. They're giving different ideas. Because normally, whenever there are many sages, there has to be many ideas. Because उस समय बहुत सारे अलग-अलग ऋषि थे, कोई यज्ञ करने के लिए कह रहा था, कोई तपस्या करने के लिए कह रहा था, कोई आशीर्वाद के लिए कह रहा था। जब बहुत सारे अलग-अलग ऋषि होते हैं तो अलग-अलग मतांतर होता है। Because a person becomes a sage because he has different idea from previous sage. That's why a person become qualified as a rishi. He must have different ideas. So when Parishit Maharaj asked the sages what he should do, so they are giving different ideas. सबके अपने ज्ञान, अनुभव और प्रवृत्ति के अनुसार सब अलग-अलग ऋषि अलग-अलग अपना अनुभव और विचार व्यक्त कर रहे हैं। So as this discussion was going on, Sukadeva Goswami came on the scene. He arrived on the spot where everyone was gathering and where Parishit Maharaj was asking the rishis different questions. जब ये चर्चा चल रही थी, उसी समय सुखदेव महाराज जी का प्रकट हुआ। And when Sukadeva Goswami arrived, because Sukadeva Goswami was a very special personality, even though he was very young, compared to all the sages who were, many of them were like billions and billions of years old. But Sukadeva Goswami was very young. He was the son of Vyasadeva. जब सुखदेव महाराज वहाँ पे प्रकट हुए, तो वहाँ पे उनसे बहुत बड़े-बड़े, क्योंकि उम्र में बहुत बड़े थे, वहाँ पे सब थे। हालांकि सुखदेव महाराज बहुत ही कम आयु के थे, लेकिन वहाँ पे उनसे अधिक बड़े-बड़े सब ऋषि महामुनि थे। But when he arrived, all the sages, they all got up to receive him and they offer him a seat. They offer him a vyasasana. जैसे ही वे प्रकट हुए, सारे ऋषि खड़े हो गए और प्रणाम सबने किया। Because they know that Sukadeva Goswami was not an ordinary person. So they all received him because Sukadeva Goswami has such a unique characteristics. क्योंकि वे सब जानते थे सुखदेव महाराज जो है तो कोई समान व्यक्तित्व नहीं है, वो सब जानते थे कि असमान व्यक्तित्व है। So Sukadeva Goswami asked the rishis, not Sukadeva Goswami, Parishit Maharaj asked Sukadeva Goswami the same question which he had asked the rishis. उस समय परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज जी से वही प्रश्न किया और सभी ऋषियों से पूछा। That what should you do? What should be the duty of a person who's about to die?
Therefore, what is the duty of everyone in this world, and especially someone who is about to die? उस समय परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि एक मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। So Sukadeva Goswami replied that you should hear Krishna Katha. Talks about Krishna. सुखदेव महाराज जी ने कहा आपको कृष्ण कथा कृष्ण तत्व सुनना चाहिए। So when all the sages, when they heard this reply from Sukadeva Goswami, they all say, "Oh, sadhu, sadhu, sadhu. This is the." जैसे ही समस्त ऋषियों ने सुना कि कृष्ण कथा कृष्ण तत्व सुनना चाहिए, सभी ऋषियों ने कहा साधु साधु साधु। That is the best answer to talk to hear about Krishna. ये सबसे उत्तम उत्तर है जो कि कृष्ण कथा के लिए कहा गया है। Because when you hear about Krishna, when you constantly hearing about Krishna, then you can be free from the ocean of birth and death. क्योंकि सतत कृष्ण कथा सुनने से जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त हो सकते हैं। And then Parishit Maharaj began to ask Sukadeva Goswami so many questions. फिर परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से बहुत सारे अलग-अलग प्रश्न पूछे। And Sukadeva Goswami, of course, being a perfect master, so he was giving answer to all the questions of Parishit Maharaj. सुखदेव महाराज विपूर्ण एक आचार्य थे, इसलिए सारे प्रश्नों का पूर्ण उत्तर दे रहे हैं। So, because Sukadeva Goswami was full of knowledge, he had all the knowledge, completely, fully self, and not just that, he has all the knowledge, and he's also self-realized. He also realized the knowledge. That's Gyan and Vigyan. Knowledge and then the realization of knowledge. क्योंकि सुखदेव महाराज को पूर्ण ज्ञान था और केवल ज्ञान बस नहीं, ज्ञान का अनुभव भी था, आत्म साक्षात्कार भी था, इसलिए पूर्ण उत्तर दे रहे हैं। So, even though Sukadeva Goswami had said that everyone in this world should hear Krishna Katha, so now Parishit Maharaj, he wants to know everything about Krishna. He wants to know everything about the creation and everything he wants to know. परीक्षित महाराज सब कुछ जानना चाहते थे, सृष्टि के बारे में है, सब कुछ जानना चाहते गुरुदेव महाराज। Because when we say Krishna Katha does not mean that to describe Krishna's activities, especially in Vrindavan. Krishna Katha means everything about Krishna, his creations, how the planets, about the living entities, all those who are connected with Krishna. It's all everything connected together. It's all Krishna Katha. कृष्ण कथा का तात्पर्य ये नहीं है कि वृंदावन की लीलाएं बस कहें। कृष्ण कथा का तात्पर्य है कृष्ण के बारे में सब कुछ कहना, जो कुछ भी कृष्ण के विषय में सब कुछ कहना। So this begins from creation. ये जो है जो सृष्टि के आरंभ में हुआ। And this canto of Bhagwatam is dealing with creation. और ये जो स्कंद भागवतम का है जो सृष्टि के निर्माण के विषय में, which means the beginning, how everything begins. इसका तात्पर्य है प्रारंभ, सब कुछ का प्रारंभ। About the manifestation of Brahma and about how Brahmaji manifested the universe, created all the divisions and all that, after listening to the instructions of the Lord. ब्रह्मा जी के सृजन के बारे में है, ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में है और सृष्टि के अलग-अलग विषय के बारे में इस स्कंद में बताया गया है। So this the question by which Parishit Maharaj asked Sukadeva Goswami. So this question has been answered, and then Sukadeva Goswami will now begin to describe how the beginning process, how everything begins from the manifestation of the universe. Sukadeva Goswami will begin describing. यहाँ पे परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है उसका उत्तर सुखदेव महाराज दे रहे हैं शुरुआत से। Now, one thing about knowledge,
has been said in this verse, which we are reading today, and also the commentary of the Srila Prabhupada, is that this knowledge, which was originally given by the Supreme Lord, Krishna, did not, because knowledge comes from him. Lord Krishna says, first of all, he said, Veda Hansamati Chani, that I'm to be known by the Vedic scriptures. And then he said, the Vedas come from me. I'm the original speaker of the Vedas. यहाँ पे ज्ञान के विषय में कहा गया है और श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं वेद हूँ. And then from the Lord, this knowledge was imparted into Lord Brahma. It was given to Lord Brahma, this knowledge, because he's the original person in this universe. फिर इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया था, क्योंकि सबसे शुरुआत में ब्रह्मा जी थे. And then Brahmaji, same knowledge which he had received from the Lord, he gave the same knowledge to his disciple Narada Muni. सेम वही ज्ञान जो ब्रह्मा जी को मिला भगवान नारायण से, उन्होंने नारद मुनि को प्रदान किया. So Narada Muni received this knowledge from the Brahma, and then Narada Muni, the same knowledge, he passed it to Vyasadeva. जो ज्ञान नारद मुनि को ब्रह्मा जी से मिला, सेम वही ज्ञान नारद जी ने व्यास जी को दिया. And then Vyasadeva passed it on to his disciple Sukadeva Goswami. फिर वही ज्ञान व्यास जी ने सुखदेव महाराज जी को प्रदान किया. And Sukadeva Goswami now is giving this knowledge to Parikshit Maharaj. और वही ज्ञान सुखदेव महाराज परीक्षित जी को दे रहे हैं. So this is the way of receiving perfect knowledge. This is the way to receive perfect knowledge. यही पद्धति है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की है. Perfect knowledge must come from the surface section, from parampara. It must come that way only. पूर्ण ज्ञान जो है परंपरा से आना चाहिए, परंपरा पद्धति से आना चाहिए. So this Vedic knowledge is not based on speculation. It's not based on someone's idea. It's a knowledge that comes down, originally from the Supreme Lord and through the chain of parampara system. यह जो ज्ञान है तो कल्पनाओं से नहीं आता है, यह ज्ञान वैदिक परंपरा से आता है. So if any knowledge is not received that way through this parampara system, then it's simply a disturbance. It's not really knowledge. यदि कोई ज्ञान परंपरा से नहीं आता है तो वह केवल उत्पाद उत्पन्न करता है. Because in this world we know there are many people who claim themselves to be men of knowledge. They claim that we have knowledge. And this so-called knowledge is based on their own ideas, through speculations, through analyzing the elements of the material world, through the analyzing this process. आजकल कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ज्ञान प्रदान करने वाला समझते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है तो कल्पनाओं से आता है, व्यक्तिगत विचारधारा से आता है. But they can never come to any conclusion because they have all these so-called scientists who have so-called many knowledge, that whatever idea they have is always changing. लेकिन उनका जो ज्ञान है कभी किसी निष्कर्ष में नहीं आ सकता है, क्योंकि उनका ज्ञान हमेशा परिवर्तित होता रहता है. And all their knowledge, so-called knowledge, it never gives a solution to the problems of this world. Never give any solution. आजकल जो ज्ञान है किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, समस्या का उत्तर नहीं दे पाता. Especially how to understand who we are, what is our nature, what is our relationship with God, and how to attain Him, how to get out of this material world. This knowledge you will not find anywhere in this world. हम कौन हैं, प्रकृति क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ये सारा ज्ञान हमको भौतिक संसार से नहीं मिल सकता है. So therefore, no one is ever satisfied with all this mundane knowledge. No one is ever satisfied with it. इसीलिए कोई व्यक्ति
संतुष्ट नहीं है वर्तमान ज्ञान से। But the knowledge of the Lord, the Vedic knowledge, which comes directly, which come from through parampara system, when the answer is given, them people become satisfied. It satisfies the soul. लेकिन जो भगवान का ज्ञान है वो परंपरा से आता है, इसलिए कोई भक्त जो है हृदय से संतुष्ट हो सकता है। This knowledge becomes fully satisfied, and especially that's why when you read Bhagwatam, you're never tired of reading Bhagwatam. You're never tired of it. यह ज्ञान जो है पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है, इसलिए हम भागवतम से कभी नहीं थकते हैं। Because the Supreme Law is become revealed through the pages of Srimad Bhagwatam. It's revealed through the pages. क्योंकि श्री भगवान ने केवल भागवतम के रूप में अपने आप को स्वयं प्रकट किया है। So therefore, we should follow the footsteps of the previous personalities by accepting this knowledge through the proper method of parampara system. इसीलिए हम सबको आचार्यों को आचार्य की परंपरा को फॉलो करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। And that's why our Guru Srila Prabhupada, that's why they always emphasize that this knowledge must be received properly, must be read properly. This knowledge of the Bhagavatam must be received properly. इसीलिए श्री प्रभुपाद जो है हमेशा इस बात में दबाव देते थे कि हमें परंपरा से उपयुक्त ज्ञान से भागवतम से लेना चाहिए। So this is what's been emphasized in this verse, and also the purport by Srila Prabhupada, that yes, the knowledge was received originally from the Lord to Lord Brahma, and Lord Brahma gave the knowledge to his son Narada Muni, and Narada Muni gave it to Vyasadeva, like that. यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक में कहते हैं हमें परंपरा से ज्ञान जो नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास परंपरा से हमको देना चाहिए। So we should follow the same way. If we follow the same way, then we will be rightly situated. We should follow the same way. हमको वही जो हमें आचार परंपरा से मिलता है वही उसी प्रकार से उसका अनुसरण करना चाहिए। So everything is there. Everything is there to be known. Anything to be known is there in the Bhagavatam. Everything is there. सब कुछ श्रीमद् भागवतम में दिया है, जो कुछ भी हमको जानना चाहिए, जो कुछ भी ज्ञान है, सब कुछ श्रीमद् भागवतम में दिया है। So devotees of Krishna, they are never devoid of knowledge. They are always in full knowledge. Devotees of Krishna. भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं ज्ञान से कभी अलग-अलग नहीं होते हैं, तो ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। Because devotees of Krishna, they are receiving this knowledge through the parampara system. कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं इस ज्ञान को परंपरा से ग्रहण कर रहे हैं। So therefore, this parampara method of receiving knowledge is the most important, is the most essential. इसीलिए जो परंपरा है, परंपरा पद्धति है ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही सारगर है। We cannot say that, oh, I can just pick up this book, any book, scriptures, and try to understand it on my own. No, if you do so, we'll be confused. If you do so, there'll be just confusion. If you try to understand this knowledge by just speaking on the book, by just reading it, the confusion will be there. यदि हम स्वयं के द्वारा कल्पनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो हमेशा उसमें कल्पनाएं ही रहेंगी, समस्याएं ही रहेंगी, भ्रम ही रहेगा। But if it's heard through the proper authorities, to the authorized parampara system, then there'll be no confusion. Everything will be cleared. लेकिन यदि इसे परंपरा पद्धति से श्रवण किया जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई संशय नहीं रहेगा। So in the Bhagavatam 11th canto, Krishna says that Tasma Guru Papadya Tajigya Sushayavotama Sabda Parichanisnatam Brahmanam Pamashta. Yeah. So Lord Krishna is telling Uddhava that one should find a guru, a bona fide spiritual master, and one should inquire from him. Jigyasu, one should inquire from him.
And of course, there's a qualification, of course, of the Guru. The Guru must someone who is very qualified, who is a devotee of Krishna, who has also received his knowledge from the Parampara system. इसीलिए भागवतम के ज्ञान में अस्कंद में ज्ञान की परंपरा को पद्धति को बताया गया है। ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, किस पद्धति से, किस गुरु से, किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। So therefore, we are emphasizing parampara again and again, again and again. इसीलिए हम लोग बार-बार परंपरा के लिए दबाव देते हैं, बार-बार दबाव। But why is the parampara system being emphasized? Why? Because the living entity is stubborn. The living entity is stubborn, doesn't want to accept. So that's why it's like Prabhupada is always emphasizing this parampara system, always emphasizing again and again. You accept the parampara, you get this knowledge from parampara, and then you will not be confused. इसीलिए श्री प्रभुपाद जी परंपरा के लिए हमेशा दबाव दे रहे हैं। परंपरा होना चाहिए, परंपरा पद्धति होना चाहिए, परंपरा पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। So that is the way of receiving perfect knowledge. यह पद्धति है श्री प्रभुपाद जी के ज्ञान को परंपरा पद्धति से प्राप्त करने। So I'm going to stop here. I guess is there any method of asking question? No. इसीलिए महाराज जी यहाँ पे भागवतम क्लास को विराम देंगे। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। Yeah, online. Did they ask question online? Or? यहाँ पे जो ऑनलाइन दूर से सुन रहे हैं, तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन दूर से सुन रहे हैं। Did they ask question? Do they ask question? Not possible. Sometimes I have given so many Zoom classes. People do ask questions. महाराज जी कह रहे हैं कि Zoom के द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। महाराज जी बहुत सारे Zoom की क्लास देते हैं। यदि कोई Zoom से पूछना चाहे तो Zoom से भी पूछ सकते हैं। Yeah, I'll put you at the back. Mataji, question is asking that what is value of guru? Why we should make guru? That is the question. Because without a guru, we will always remain blind. यदि हमें गुरु नहीं रहेंगे तो हम हमेशा अंधे रहेंगे। It is the guru that reveals everything to us. Because the guru knows, so because guru knows, so he reveals everything to us. कि गुरु सब कुछ जानते हैं, इसलिए सब कुछ प्रकट करेंगे, सब कुछ जो भी ज्ञान का है सब कुछ प्रकट करेंगे, सब कुछ बता देंगे। So he revealed to us knowledge of Bhagavan, knowledge of our relationship with Bhagavan, and also knowledge of how we can connect ourselves with Bhagavan through service. इसीलिए जो गुरु है भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान से संबंध प्रदान करते हैं और उस संबंध को जानने की जो पद्धति है, सिद्धांत है, वो भी प्रदान करते हैं, माध्यम को प्रदान करते हैं। So without guru, all this will not be known. Without guru, this will not be known. This knowledge. बिना गुरु के ये सब नहीं ज्ञान सकते। So which means we will always remain confused about life, about everything. We will always remain confused. इसका अर्थ है हम हमेशा भ्रमित रहेंगे। By those who have accepted qualified guru, a guru who knows, a guru who is especially a guru who is a pure devotee of Krishna. Such a person, they always, everything is clear to them. Such a person who have accepted the guru, and they always remain blissful. They remain blissful because everything is clear to them. जो गुरु है भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और हमेशा स्पष्ट रहते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं और हमेशा सुख में रहते हैं, ज्ञान में। So therefore, only those who accept guru,
They are the only one who can understand the supreme absolute truth. Nobody else can understand the absolute truth. जिन्होंने गुरु को प्राप्त कर लिया है तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। जो गुरु को प्राप्त नहीं किए हैं वो हमेशा भ्रमित ही रहेंगे। Even Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, he said, Tavidi Paripachena Paripachena Sevaya, that in the beginning you should approach a guru and ask him question, and learn how to serve. Upadeshan Jnana, Gannata Tudashina. So you have to approach a guru and ask him. Lord Krishna says that. इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, जानने की इच्छा करना चाहिए, और ऐसे गुरु जो कि सब कुछ जानते हैं। And in the beginning of the Gita, Arjuna himself, after he was giving a lot of deliberation why he should not fight on the battle, so Arjuna became confused. Then he told Krishna, he said, Sriham Sadhumantam Prapanam, said, oh my dear Krishna, I have lost all composure. I do not understand anything. I'm so confused about what to do. So therefore, Sister said to us, I want to become your disciple. Please enlighten me. Because Krishna is the supreme guru. So Arjuna asked Krishna, I want to be your disciple. Please give me enlightenment. गीता के प्रारंभ में अर्जुन बहुत भ्रमित थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब फिर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य होता हूँ, मुझे आप ज्ञान प्रदान करें। Is that okay? ठीक है। और किसी कोई प्रश्न है? जिज्ञासा है? Is that ठीक है, वाणी को विराम करना चाहिए। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो किन्हीं ड्यूटीज का ऑनलाइन क्वेश्चन भी नहीं है प्रभु जी, कोई हैंड रेस नहीं किया है, तो यहीं पे ऑनलाइन है, एनिमेल प्रोग्राम भी है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। some online question is there? No, कोई ऑनलाइन प्रश्न है, किसी कोई ऑनलाइन जो जूम पे लाइव सुन रहे हैं? Are you saying no question online? Is that what you say? No questions. Oh, okay. All right, thank you very much for listening. So it's my pleasure to have say something to everyone here. थैंक यू। तो कृपया सभी ड्यूटीज अनम्यूट करके महाराज जी का धन्यवाद कीजिए। हरि बोल बोलकर आप। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Somebody is asking a question. Is asking that if I cannot approach the guru, then Haribol, Haribol. No, you cannot approach Krishna. Krishna is not revealed. He's not revealed to a pure devotee, to a devotee. नहीं, भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, भगवान प्रकट नहीं करेगा क्या आपको? Because you don't know who Krishna is. How are you going to approach him? You don't know who Krishna is. आप नहीं जानते कि भगवान कौन है, कैसे भगवान कृष्ण को पसंद करते हैं, कैसे? So Krishna revealed only through a bona fide guru, bona fide spiritual master. इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है तब क्या आपको प्रकट करते हैं एक व्यक्तित्व गुरु के बारे में। Okay, thank everyone. Thank you very much. Jai. Srila Prabhupada ki. Bhagwatam ki. Gopi Manande.